अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए, बिकॉज वी नॉर्मली हैव हार्डवेयर विच इज, अगर आप फील्ड के अंदर देखेंगे तो यू हैव हार्डवेयर फॉर मॉडबस, लाइक कोई कंट्रोलर होगा जो मॉडबस को सपोर्ट कर रहा हो, राइट? यू कोई पीएलसी है वो मॉडबस को सपोर्ट कर रही है, दैट कैन बी एनी डिवाइस, राइट, विच सपोर्ट्स मॉडबस। तो आपके पास कम्युनिकेशन क्या होती है मॉडबस की? जो भी डिवाइस है, एनी कंट्रोलर, दैट कैन बी पीएलसी कंट्रोलर और समथिंग, पीएलसी स्लैश कंट्रोलर, ठीक है? कुछ भी हो सकता है विच सपोर्ट्स मॉडबस, इवन इन सम केसेस टीसीएसएस आर आल्सो सपोर्ट द मॉडबस। अब ये डाटा आइदर एचएमआई पे आ रहा होगा मॉडबस के जरिए, या किसी जो है स्केडा स्टेशन पे आ रहा होगा, या किसी जगह पे डीसीएस स्क्रीन के ऊपर भी आएगा, ठीक है? तो एचएमआई, डीसीएस स्लैश स्केडा, so these are all the components which are receiving the data, या जिन पे आप मॉडबस के जरिए डाटा उठा। So sources, you have PLCs, right? For instance, here you got this guy sharing the data to this HMI, DCS, and SCADA. Right now, to simulate this PLC, एक तो है कि आप रियल हार्डवेयर में मॉडबस जो सपोर्ट कर रहा है उस पे यू गो अहेड एंड जस्ट सिंपली ट्राई वर्किंग ऑन दैट। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, इफ यू आर न्यू, instead of that PLC or controller with support Modbus, there is a simulator for Modbus, okay, which will give you even inside view कि memory के अंदर क्या है। वैसे तो controller की memory आपको नजर नहीं आएगी once you open up the things, right? It would not be easy to understand. As a beginner, if anybody starts, I always says कि यार आप पहले simulator पे जाएं, simulator से understanding आपकी वो develop होगी, फिर controller पे जाएंगे तो आपको हलवा लगेगा। So that's where we are gonna start. हमारे पास यहाँ पे जो इस सिनेरियो के अंदर हम यहाँ पे WinTR SCADA पे डाटा ले रहे होंगे, the way we pull out the data last time for the OPC, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम डाटा WinTR SCADA पे ले रहे हैं, ठीक है? सेम सॉफ्टवेयर। और on another hand यहाँ पे simulator, there is no real hardware to interact with. अच्छा, यहाँ पे जो केबल्स हैं ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि दो तरह की टाइप्स हैं, एक है मॉडबस आरटीयू और एक जो मेजॉरिटी यूज होती है, वैसे तो टाइप्स ज्यादा भी हैं, मॉडबस टीसीपी आईपी। अच्छा, इसकी बेस के ऊपर ना ये जो दरमियान में कनेक्शन केबल है ये वेरी करेगी। इफ यू गॉट मॉडबस आरटीयू, इन दैट केस ये केबल जो दरमियान में होगी ये सीरियल होगी, सीरियल कम्युनिकेशन RS232 और RS485, इन दोनों में से होगी, ठीक है? सीरियल कम्युनिकेशन किया। और अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे, अगर ये मॉडबस टीसीपी आईपी है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ईथरनेट केबल होगी। So in our exercise we are going to be using Modbus TCP IP, so that's why the connection would be through Ethernet or IP based connection, ठीक है? तो ये सिनेरियो है हमारी आज की लैब का। इसके अंदर एक सिमुलेटर है और एक WinTR SCADA का सॉफ्टवेयर है। आई वुड बी शोइंग यू राइट अवे आफ्टर दिस। और हमारे पास Modbus TCP IP है, क्योंकि TCP IP है तो connection between them would be Ethernet. But here in this case, as we are using the same system, like which जिसके ऊपर simulator है और जिस पे WinTR SCADA है, so that's why we don't need to have any cable sort of a thing. But anyways, like if required, you should understand what is the physical medium for this. अब अगर आपको serial communication का idea नहीं है, don't need to worry about that. I will post link into the group आपकी learning के लिए कि RS485, RS232 क्या है, and you can understand the differences between them. और मतलब serial communication के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। I will post the links for you because we would not be able to cover all the details in this session, क्योंकि थोड़ा limited sessions हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे relevant information जो important है उसी को ही cover किया जाए, जो आप इंडस्ट्री में day to day ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो mostly the configurations or integrations I have done, that is through Modbus TCP IP. Although
in some of the cases we have done the Modbus RTU thing as well, but later on हमने उसको convert किया again to the TCP/IP. I hope things are clear. अभी clear नहीं है तो कोई मसला नहीं है, sketch है, sketch से हमने कुछ चीज draw करनी है. सबसे पहले क्या है जी? As you can see this, we got a simulator. So I need to open up a simulator first. Where is our simulator? यहाँ पे कहीं होगा हमारा simulator. किधर है भाई? ये रहा mod sim के नाम से, mod rsim. क्या जी? ये simulator परेशान होने की जरूरत नहीं. I will post that simulator for you guys. उसका link मैं आपके साथ share कर दूंगा after this session. अगर पहले नहीं किया हो. अब अगर आप देखें तो like I said before, this is way easier for you to understand Modbus compared to you have a real hardware. क्योंकि real hardware में ये memory तो नहीं आपको दिखेगी कि यार इसमें memory क्या है और क्या. जैसे मैंने वीडियो में भी explain किया, we got in addresses, we got in different types of memory areas into Modbus. We got holding registers. This is for analog, which you can see right now. We got in also digital inputs. हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास holding के अलावा extended registers भी हैं, analog inputs भी हैं. तो based on that, addresses नीचे change हो रहे हैं, right? So we would start with this holding register thing, okay? And here you can see that we have an options to choose different, like Modbus RS232, which is a Modbus serial or Modbus RTU stuff. We will not deal with it. We would be talking about Modbus TCP/IP. So we have selected Modbus TCP/IP. और उसके अलावा ये areas हैं. For instance, if you click on that, this is your 40,001, which is your first holding register into the memory of a Modbus device. ठीक है? So that would be like whatever value you will keep in. For instance, यहाँ पे आप 66 change कर रहे हैं. ठीक है? Now that registration, that particular register holds the value of 66. इसी तरीके से यहाँ पे 77 कर लें. You can keep on 99 or some whatever. ठीक है? So these are like right now you can see that कि आपने इनको values को change किया, but in real, whatever the devices which supports the Modbus, as an OT cybersecurity engineer, you don't need to do the Modbus configuration onto the devices which supports Modbus. Your stuff is to integrate that guy, which controller which have a Modbus already, और आपका काम होगा उससे data उठा के pull out कर. That's why you don't need to have an in-depth understanding of what's happening, how to configure these, devices, and like for sure, अगर आप these automation की side पे हैं, तो you might need to have an expert understanding for that. But आपका जो एरिया है वो OT साइबर सिक्योरिटी है, तो आपके पास ये कंट्रोलर होगा, like जैसे यहाँ पे सिमुलेटर है, but actually you would have one controller, this controller already, and this controller would, first thing that you should ask to the customer that if you wanted to integrate a Modbus device, कि आपके पास registers और coils की list क्या है? Share the details of all the registers which are available. Okay, and what are the coils which are available? And then what are the parameters which are connected to all these registers? Like for instance, यहाँ पे मैंने आपके सामने 40,001 पे 66 रख लिया. अब ये 66 actual में क्या है? You need have a mapping list for that. Mapping list क्या होगी कि यार ये 40,001 है, ये 66 value है, या whatever value is there, इसका जो basically backend पे tag है वो temperature आ रहा है इसके साथ. अगर for instance 40,002 है, 77 इसकी वैल्यू है, इसका जी ये बैकएंड से फीड से फ्लो वैल्यू आ. सो दैट्स हाउ यू शुड हैव इंफॉर्मेशन. लाइक अगर आपके पास आप इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो आपको तो पहले आईपी एड्रेस चाहिए कि यार ये जो डिवाइस है इसका आईपी एड्रेस क्या है. व्हाट एल्स यू नीड टैग नेम, एंड यू आल्सो नीड Modbus address. Modbus address यही जैसे 40,001 or something like. So अगर ये चीजें नहीं है, you cannot think to have any integration thing. ठीक है, ये आपके पास normally वो Excel sheet आपको provide करेंगे, और आपका काम यहाँ से start होगा कि जब ये device already है, ठीक है, it's already there, and now that's where you would just make a connection, this connection which I showed you earlier,
यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन करना है, एंड देन यू वुड बी जस्ट सिंपली इंटीग्रेटिंग दैट. इंटीग्रेशन कैसे होगी? लाइक सिंपली वी हैव टू ओपन अप द SCADA सॉफ्टवेयर विच इज WinTR कनेक्शन के बाद ऑब्वियसली. लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये Modbus का सॉफ्टवेयर और SCADA दोनों एक ही सिस्टम में है, that's why we don't need to have any cable because it's already we are pulling out the data inside the same system because it's a simulation. Otherwise, an ideal scenario, it would not be like that. आप यहाँ पे आके new project create करें. Name it like, for instance, Modbus simulation. Okay, so like that. अब यहाँ पे आप connection manager में आएंगे. Things are very simple. Already you got this Modbus tab. Obviously इसी पे ही आना होगा. Right click करेंगे यहाँ पे add, similar to the one we did for the OPC thing. फिर यहाँ पे आएंगे, right click करेंगे network properties. अब आपके सामने दो options हैं. Modbus RTU. We are not using serial communication. Like I said, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, it's a Modbus TCP/IP. So we have to change this to Modbus TCP/IP. अब यहाँ पे जो वैसे IP एड्रेस है, क्या होना चाहिए? अगर फॉर इंस्टेंस ये डिवाइस है, लाइक यहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस ये PLC कंट्रोलर है, whatever the IP address that you got in for that controller would be the IP address that you would be putting here into this tab. ठीक है, जो Modbus का कंट्रोलर है. लेकिन as we are using simulation and the simulator lies within the same system, that's why the IP address would be 127.0.1 and the port number. This is very, very important for a cybersecurity professional. ये पोर्ट नंबर क्या है Modbus की? क्योंकि आपकी आगे जाके जब आप Modbus की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या उसकी आप बात करते हैं कि यार आपने फायरवॉल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो you need to understand what is the port number that this guy uses it. So that's 502. Okay. ये majority of the interviews you might ask, they might ask you this question. And today after this session, I will be sharing with you different protocols and their port numbers. ठीक है, ताकि आपको पता हो कहीं भी configuration करने की जरूरत पड़े तो you should know that what is actually the story of this different protocols and their port numbers. So like I said, यहाँ पे same system है, so 127.0.0.1 and the port number that's for Modbus. The Modbus TCP/IP uses all the time 502 port. You can click OK. यहाँ पे expand करेंगे, यहाँ पे expand करेंगे, and then यहाँ पे आके आपने address देना है. Like I said before, आपको पहले IP address चाहिए था, वो आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? And now you need an address. Address is actually, like for instance, this is your address. We started with 1. We have 3 tags. For instance, इसको अब ये tag name क्या है? आपको Modbus के address तो पता चल गया. What is the tag name for that? That's speed, right? और अगर यहाँ पे देखें तो ये 40,002. For instance, मैं कहता हूँ यार ये flow है. But actually में ये आपको जिस डिवाइस से आप डाटा उठा रहे हैं वहां का जो कस्टमर इंजीनियर है वो प्रोवाइड करेगा डिटेल्स कि यार ये टैग नंबर है, इसका एड्रेस ही है. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट फॉर नाउ. 40,003. Okay, so that for instance we keep it temperature. So we got different variables already set in. Before we do some sort of HMI or screen for the SCADA, let's connect and see whether we are pulling out the data or not. So you got in a connect option over here. So once you connect, you see that all the tags are pulling out from that simulator, which is right over here. आपके सामने तीनों values जो हैं show हो रही. Like for instance, let's change some value from here. देखते हैं क्या value change होती है. 88 कर देता हूँ. Let's see if the value is updated over here. You can see that the value is updated. Okay, so likewise, you can change the values from the simulator as well and from the SCADA screen. For instance, मैं यहाँ पे इसको 11. Okay, let's see if the value 11 is already here or not. You can see that the value is already updated. अब ये सारे टैग्स आपके पास Modbus के SCADA पे आ चुके हैं. कितना मुश्किल था अभी तक? कोई क्वेश्चन? Anybody?
Vikas bhai, are you clear with this? Qasim, are you there? जी ओके है नुमान भाई. Okay, in that case, we are fine with it. Okay. अभी हम करते ये हैं कि हाँ, Qasim, are you back or still not there? Okay. यहाँ पे screen designer में जाएंगे and then we will be creating a new screen. और यहाँ पे for instance हम एक cage बना देते हैं. I don't want to show some of the bigger stuff, so I will just simply show one variable. Okay. Rest I will show simple like this. मैं एक उनमें से स्पीड का जो है वो आपको दिखा देता हूँ, but similarly you can create a screen for all others as well. Let's see if I can connect. Let's see if we have that tags available. Yes, we have tags available. So let's simply get back to the screen, open up that screen one, the one we created a while ago. यहाँ पे जाके properties, value, disconnect करना जरूरी था, that's why it was not appearing. तो speed हम यहाँ पे show कर, ठीक है, and that's it. एक tag को मैंने उठाया है, ठीक है. And then for instance, if you want to display other tags, so you can do that. मैं यहाँ पर text box के जरिए सारों को display करूँगा, बाकी जो भी दो variables हैं. Because this is not a SCADA training, it's like more into how you do the cybersecurity stuff. So that's why हमारा focus यहाँ पे different है. .NET component and text box. बट क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रोटोकॉल्स की, उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के बगैर यू कैन नॉट गो फॉर एक्सपर्ट लेवल एज एन ओटी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. ये मैं इसको फ्लो कर देता हूँ, ठीक है. ये अगले वाले को दो के अलावा क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, राइट. सो वी कैन सिंपली पुल आउट द टेम्परेचर. दैट्स इट. Now the things goes on. तो आपके सामने जी यहाँ पे भी चीजें आपके सामने विजिबल हैं. You got a display as well. यहाँ पे अगर आप for instance इसको 66 करते हैं, you would see the values change over there as well. आप यहाँ से इसको 33 करते हैं, you see the values change over there. इसको अगर आप 30 करते हैं, you would see the value change. So that's how you will do the integration thing between two devices which supports like Modbus, for instance, एक SCADA और हमने simulator के दरमियान जो communication setup की है, that's how we do it.